Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 10.3. In the end of 10.3, also we are on the way in the end of this chapter. Right? Chalo, this question is very important. Remember it. Textbook लेके बैठना है. Question number 17. Let us start. In triangle ABC, the vertices of triangle ABC are given. Find the equation and length of altitude. अल्टीट्यूड की लेंथ भी निकालनी है और उसका इक्वेशन भी निकालना है. देखो, if D is foot of perpendicular from A, then AD will be length of the altitude and line AD will be equation of altitude. वो अल्टीट्यूड बनेगी दोनों, राइट. तो हमें एडी ए से डी की लेंथ भी निकालनी है और इक्वेशन भी निकालना है. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी. वो लाने से हमें क्या मिलेगा, ए से बीसी का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड. और उसकी फॉर्मूला हमारे पास है, राइट, कि भाई the perpendicular distance from the line, that is mod ax1 plus by1 plus c. So first of all we will find the equation of line BC, right? Here equation of line BC, which formula we will use? Yes, 2 points formula, because we have 2 points. तो 2 points formula हम लगाएंगे. It is x1 by 1, it is x2 by 2. So x minus x1, sorry, x minus x1 means minus 4 upon x2 minus x1 means 1 minus 4 is equal to y minus y1, it will be plus 1 upon y2 minus y1 means 2 plus 1. Therefore x minus 4 upon minus 3 is y plus 1 upon 3. 3 चल बसे, ये -1 मैंने सामने दिया तो ये हुआ x minus 4 is minus y minus 1. सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, then it will be x, y हुआ प्लस -4 plus 1 will be -3, which is an equation of line BC. जो हमारा काम हो गया. अभी A से B का perpendicular distance, that will be the length of altitude. Therefore now length of altitude from A is AD is equal to, AD will be the length of altitude. कौन सी formula? Obvious distance formula. Distance of a line from the given point. Compare it with AX plus BY plus C equal to 0. AX plus BY plus C equal to 0 का x1 y1 से जो distance की formula है that is AX1. So 1 into 2 plus BY1. So 1 into 3 plus C is minus 3 upon under root a square plus b square, that is 1 plus 1. So equal to mod 2 plus 3 minus 3 upon root 2. 3 चल बसे, mod 2 is 2 upon root 2, that will be root 2, which is रिक्वायर्ड डिस्टेंस. मतलब ये लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड हमें मिला. अब मुझे रिक्वायरमेंट है लाइन एडी की, दैट इज लाइन एडी विच कंटेन्स द अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है. अब सी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, देयरफॉर देयर स्लोप्स विल बी ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल. बीसी का स्लोप जितना है उससे ऑपोजिट रेसिप्रोकल एडी का स्लोप मिलेगा. तो सबसे पहले नाउ स्लोप ऑफ line BC
इज इक्वल टू 2 पॉइंट्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं भाई, और हमारे पास इक्वेशन भी तो है, सो माइनस ए बाई बी दैट विल बी इजी, अकॉर्डिंग टू माइनस ए बाई बी it will be -1. Therefore, slope of line AD will be opposite and reciprocal. मतलब मुझे जो अल्टीट्यूड है उसका स्लोप मिल गया. 1 point is already we have, that is 2 3. तो by point slope formula, therefore equation of line AD which passes through 2 3 and having slope 1, so y minus y1 is equal to m into x minus x1, therefore y minus 3 is x minus 2. सब कुछ सामने ले जाओ तो x तो RHS में था, y गया सो माइनस हुआ, -3 will be plus 3 minus 2 is +1, which is our required equation. So this is the length of altitude and it is an equation of line containing the altitude. Clear point? चलो question number 18. If P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts are A and B, भाई मतलब क्या होगा इसका? देखो, we have a line whose intercepts are A and B, whose intercepts are A and B, means if x intercept is A, then it is intersecting x axis on A0, and if y intercept is B, so the intersection point of with y axis will be 0B. Now P is the perpendicular from the origin, means this, it is P. So prove this. 1 upon P square plus is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. कितना easy है. So let us start. सबसे पहले we have given the intercepts are A and B. So equation of line here, equation of line whose intercepts are A and B is x upon A plus y upon B is 1, which is in intercept form. अब इसका origin से distance हमें दिया हुआ है, that is P. To measure the distance from the origin, the line should be in the form of ax plus by plus c equal to 0. Almost formulae are for the line ax plus by plus c equal to 0. तो सबसे पहले मैं इसे convert करूंगा ax plus by plus c equal to 0. For that we will take AB LCM. So it will be bx plus ay equal to AB. Therefore bx plus ay minus ab is equal to 0. Whose distance from origin is p is given. Whose distance from origin is p. Therefore p is equal to, चलो origin से distance की formula mod c upon under root, compare it with ax plus by plus c. So a is b, b is a, c is minus ab. So under root a square plus b square. Now squaring, because in result the whole atmosphere is square form. So squaring, therefore it will be p square is equal to, after taking the square, modulus का कोई मीनिंग नहीं रहेगा यहाँ पे. So b square plus a square. Now have need of 1 upon p square. So taking reciprocal form, it will be b square plus a square upon a square b square. Sorry.
अभी यहाँ पे एलसीएम डिवाइड कर दो, सो 1/p² इज, देखो b² कटेगा, बचेगा 1/a², यहाँ पे a² कटेगा, बचेगा 1/b², which is our required and Zingo answer. So please write down this. Okay, so exercise 10.3 is completed and going to start the miscellaneous exercise, and the first question of the miscellaneous exercise. Let us start. Find the value of k for the line, this line which is parallel to, when the pitch is parallel to x-axis, when parallel to y-axis, when passing through the origin. अगर ये line parallel to x-axis है, then find k. If it is parallel to y-axis, then find k. If it is passing through origin, then find k. ये सारी conditions मैंने आपको स्पेशली अलग से बुक में नहीं दी है, समझाई हुई है कि if line ax plus by plus c is parallel to x axis, then what? Parallel to y axis, then what? And passing through origin, then what? तो देखो one by one we will take the conditions. First, when line parallel to x axis, भाई x axis को पैरेलल है, इसका मतलब ये होता है which will be horizontal. If line is parallel to x axis means horizontal, then its y coordinate will be constant. अगर y coordinate constant होता है, so the coefficient of x should be 0. अगर x का coefficient 0 हो गया, then हमारा काम हो गया. Then coefficient of x, that is k minus 3, is equal to 0, and therefore k equal to 3. So when you take k is equal to 3, this will be 0, y equal to constant हो जाएगा, and y equal to constant will be equation of line parallel to x axis. Second clue, when line is parallel to y-axis. If line is parallel to y-axis, it will be vertical, and for the vertical line, the x coordinate will be constant. मतलब y का जो coefficient है, that will be 0. Then 4 minus k square equal to 0. So k square is equal to 4, and therefore k is equal to plus or minus 2. When k is equal to plus or minus 2, line will be vertical. Now for third question, our line is passing through origin. मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि when line passes through the origin, its constant term will be 0. यहाँ पे the constant term is k square minus 7k plus 6. If line passes through origin, if line passes through origin, the constant term will be 0, means k square minus 7k plus 6. अब k की वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर्स करने हैं, और आपके लिए फैक्टर्स तो बाएं हाथ का काम है. You are master in the factors. Minus 6k minus k plus 6 equal to 0. k कॉमन तो बचेगा k minus 6. यहाँ से minus 1 कॉमन तो बचेगा k minus 6. Therefore k is equal to 1 और k is equal to 6. कितना इजी हो गया. So for k equal to 3, it will be parallel to the x-axis. For k equal to plus or minus 2, will be parallel to y-axis, and if k is 1 or 6, it will pass through the origin. कितना इजी है बेटा. चलो क्वेश्चन नंबर 2. Find the values of theta and p if the equation x cos plus y sin equal to p is normal form of this type.
भाई किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म निकालना है तो मैंने एक सम मैंने अलग से दिया हुआ है, एक सम बुक में से भी करवाया था कि हमारी जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमेशा उसे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है और आरएचएस को पॉजिटिव बनानी है, ये भी याद रख लेना, आरएचएस को पॉजिटिव बनानी है, देन इट विल बी वेरी इजी। तो बुलाओ लाइन को, हियर वी हैव √3x। अब देखो आरएचएस को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ये दोनों टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाके फिर पूरा घुमा के लिखूंगा, देन द फॉर्म विल बी, ये सामने गया सो हुआ -√3x, ये सामने हुआ तो -y इक्वल टू 2। नाउ कंपेयर इट विथ ax प्लस by प्लस c, सो a इज √3 एंड b इज 1, तो मैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा पहले यहाँ पे। नाउ रूट ए स्क्वायर मीन्स 3, सॉरी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ √3 स्क्वायर इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, its square root will be 2, divide equation by 2, divide equation by 2, so this will be minus √3 by 2x minus 1 by 2y is 1. Compare it with x cos theta plus y sin theta is p, therefore cos theta will be minus √3 by 2 which is less than 0, sin theta will be minus 1 by 2 which is less than 0 and p is equal to 1. so p हमें मिल गया 1। अब थीटा की वैल्यू लाने के लिए cos is negative, sin is negative, whenever both are negative the theta will be in the third quadrant में आएगा। अब देखो cos is negative, sin is negative, third quadrant। second thing, the value of cos is √3 by 2 and value of sin is 1 by 2 means the theta will be pi by 6। अब थर्ड क्वाड्रेंट का pi by 6 मुझे चाहिए, तो फॉर दैट बाय आवर मेथड pi by 6 of first quadrant is pi by 6, pi by 6 of second quadrant will be 5 pi by 6 and pi by 6 of third quadrant will be 7 pi by 6। so यहाँ पे थीटा हमें मिलेगा 7 pi by 6, therefore theta will be 7 pi by 6। so the equation will be x cos 7 pi by 6 plus y sin 7 pi by 6 is equal to 1 where theta is equal to 7 pi by 6 and p is equal to 1 are our required values। now question number 3, ये भी बढ़िया सम है, देखना। find the equation of the line which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6। अगर हमारी लाइन x एक्सिस को a0 में और y एक्सिस को 0b में कट कर रही है तो इसके इंटरसेप्ट्स होंगे a एंड b। ये ओल्ड इज गोल्ड बात है हमारी। चलो सपोज द इंटरसेप्ट्स आर a एंड b, तो यहां पे हमें क्या दिया है, द सम इज 1 and product is -6 of the intercepts, therefore a plus b is equal to 1, number 1, and product means a into b is equal to -6, equation number 2।
इक्वेशन नंबर 1 इज a plus b is 1, 2 is ab is equal to -6. अब आप ही सोचो कि भाई आपके पास ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिसका एडिशन 1 और मल्टीप्लीकेशन -6 होता हो। भाई मल्टीप्लीकेशन इज माइनस, इट मीन्स वन ऑफ देम विल बी नेगेटिव। तो नंबर्स आपको मिलेंगे 3 and -2। when you add 3 and -2 it will give 1, and when you multiply them it will be -6। तो ओरली आपको आंसर मिल गया। बट अगर मुझे यहाँ पे मेथड शो करनी है तो देखो बाय 1 b is equal to 1 minus a, putting into, so it will be a into 1 minus a equal to -6. Simplify this, so a minus a square is -6। सब कुछ राइट हैंड साइड में ले जाओ, फिर घुमा के लिखो। so this will be positive, this will be negative, this remains negative। वापस आपका काम आ गया फैक्टराइजेशन। you all are the king। चलो therefore a square minus 3a plus 2a minus 6 equal to 0। so मैंने a कॉमन निकाला तो यहां बचा a minus 3 प्लस 2 कॉमन निकाला तो बचा ये। therefore a is -2 और a is 3। भाई दोनों वैल्यूज तो मिल गई पर b नहीं मिला ना, तो b भी लाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन भी लाना है। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स ऐसा बोला है। सी व्हेन a is -2 what will be b? b will be 1 plus 2 3 by this equation। when a is 3 b will be 1 minus 3 is 2, sorry -2। तो देखो therefore equation of lines for this, here a and b are intercepts। whenever a and b are intercepts it will be x upon a means -2 plus y upon b, when a is -2 b is 3, y upon b equal to 1। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। when x is a and when x is a, x by 3 plus y upon -2 is equal to 1। इसे भी आपको सिंप्लीफाई करना है। कितना इजी हो गया बेटा, बराबर। so these are the required lines, so please write down this। okay, question number 4, one of the बढ़िया sum can be asked in the exam। what are the points on the y axis? मतलब जो पॉइंट्स हमें मांगे हुए हैं वो दोनों है y axis पर। whose distance from the line, ये जो है वो given line है, that is x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1। it is intercept form। भाई its x intercept is 3, so it will intersect x axis at 3 0 and its y intercept is 4, so ये y axis को 0 4 में intersect करेगा। so ये 0 4 3 0 हमारे ऐसे किसी काम के है नहीं, हमें चाहिए ये दोनों पॉइंट्स p and q। सपोज p के कोऑर्डिनेट्स में आपको देता हूं, इट इज ऑन y axis, so its x coordinate will be 0। suppose p0 y1 is our required point which is at 4 unit distance from this given line। तो p हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। एक्चुअली हमें दो मिलेंगे पर हम कैलकुलेशन एक के लिए करेंगे, दो का बर्थ अपने आप अंदर हो जाएगा। सपोज p0 y1 is required point of y axis। suppose p0 y1 is required point on y axis। p0 y1 is required point on
आई एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है इसका यहां से डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए लाइन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं ये लाइन को जो यहां से उसका डिस्टेंस है इसे कन्वर्ट करूंगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नाउ x अपॉन 3 plus y upon 4 equal to 1. Therefore, taking 12 LCM, so it will be 4x plus 3y equal to 12. Therefore, 4x minus 3y minus 12 equal to 0. अब p का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट। सो ये 4 यूनिट हमें दिया हुआ है ना। Now P0y1 is at 4 unit distance. So मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा 4 is equal to, अब ये लाइन से इसकी दूरी, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 4 यूनिट। मैं इसे कंपेयर करूंगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इट इज x1 y1। तो पॉइंट का जो लाइन से डिस्टेंस फॉर्मूला है दैट इज मोड ax1, so 4 into 0 plus by1, b is 3, y1 is y1 plus c upon, sorry it is plus, it's my mistake, so plus upon under root a square plus b square, so 16 plus square is 9, 16 plus 9 is 25, the square root of 25 is 5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, so it will be 20 is equal to modulus ये बना 0, so this will be 3y1 minus 12. When we remove the modulus it will give plus or minus, तो देखो 3y1 minus 12 equal to plus or minus 20. Therefore यहाँ से दो पार्ट बनेंगे, 3y1 minus 12 is 20 और 3y1 minus 12 is minus 20. Therefore 3y1 is equal to 20 plus 12 will be 32 or 3y1 is equal to minus 20 plus 12 will be minus 8. Therefore y1 is equal to 32 by 3 और y1 is equal to minus 8 by 3. तो देखो हमने पॉइंट तो एक ही सपोज किया था पर मिल दो गए। Therefore P 0 32 by 3 and Q 0 minus 8 by 3 are required point, are required points. कितना इजी है, यही सम देखो एक्सरसाइज 10.3 में आ चुका है। वहां पे पूछा था ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने सपोज किया था x1 0। अब यहाँ पे पूछा था ऑन y एक्सिस, तो हमने 0 y1 लिया। चलो बहुत ही खतरनाक सम में करवाने जा रहे हैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स को जो ज्वाइंट करती है वो लाइन का आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। मतलब द ज्योमेट्रिक मीन इज लाइक दिस, सपोज इट इज अ लाइन, 2 points are cos theta sin theta and cos phi sin phi। देखो phi और थीटा में डिस्टेंस रखना, डिफरेंस है। अच्छा ये लाइन का यहां से हमें डिस्टेंस निकालना है और अकॉर्डिंग टू बुक हमें आंसर लाना है। इसलिए यहाँ पे सम में कुछ दम नहीं है, पर उसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, राइट। चलो सबसे पहले we will find equation of line through these 2 points। 2 point formula तो है हमारे पास। equation of line passing through
passing through cos theta sin theta and cos phi sin phi. We will use 2 points formula. Chalo, what is that? That is x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon x1 y1 x2 y2. So x minus x1 means cos theta upon x2 minus x1 means cos phi minus cos theta equal to y minus y1 means sin theta upon y2 minus y1 sin phi. अब लाइन का इक्वेशन देखने जाए तो इट्स ओके, बट अकॉर्डिंग टू बुक अगर आंसर लाना है तो जो फॉर्म में आपको देने जा रहा हूं बराबर ध्यान से देखना. वी विल यूज इन द डिनोमिनेटर c माइनस c एंड s माइनस s. देखो इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री. मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कोई फॉर्मूला आ जाएगी ना आपकी हवा निकालेगी, राइट. चलो, देयरफॉर x माइनस कॉस थीटा अपॉन c माइनस 2ss इन फर्स्ट एडिशन बाय 2 in second subtraction by 2 equal to y minus sin theta as it is. In denominator we will use s minus s means 2cs in first addition by 2 in second subtraction by 2. Now see in the denominator दोनों में से 2 2 चल बसे और sin phi माइनस थीटा बाई 2 भी गए. तो अभी हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ ये और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा. देयरफॉर x माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस phi प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू, ये माइनस भी यहां पे कंसीडर करनी है, माइनस साइन फाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू वाई माइनस साइन थीटा. चलो एक्सपांड दिस. सो देयरफॉर x इंटू दिस, सो x cos phi. अच्छा, it is phi plus theta, so I can write theta plus phi. x cos theta प्लस phi बाई 2, फिर इसके साथ माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस phi बाई 2 इक्वल टू, यहां माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई साइन थीटा प्लस phi बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस phi बाई 2. अब पूरी LHS को मैं RHS को मैं लिखूंगा LHS में. ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, दैट्स व्हाई वी विल कन्वर्ट इट इन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म. वही हमारा टारगेट रहेगा. तो देखो x cos थीटा प्लस phi बाई 2 इट इज लाइक ax. अब ये LHS में आएगा तो प्लस होगा, प्लस y साइन थीटा प्लस phi बाई 2. अब ये तो ऑलरेडी LHS में है, सो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस phi बाई 2, और ये LHS में आया तो हुआ माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस phi बाई 2 इक्वल टू 0. अब जो लास्ट वाली दो कांस्टेंट टर्म है उसमें से समझो कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, देन इट विल बी लाइक दिस. ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि इट इज फॉर्म ऑफ कोसासा कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला बन गई. देखो भैया,
सोचो, थोड़ा सोचो, मैं तब तक लिखता हूं ये x cos थीटा प्लस 5/2 प्लस y sin थीटा प्लस 5/2 minus cos. It is formula of cos alpha minus beta. Theta is alpha and theta plus 5/2 is beta. So alpha minus beta by 2 equal to 0. After taking to LCM, it will be x cos theta plus 5/2 plus y sin theta plus 5/2 minus cos. See, when we take to LCM, 2 theta minus theta means theta minus 5/2. So it will be theta minus 5/2 equal to 0. So it is like ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. अब मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? मोड सी अपॉन अंडर रूट. सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू, आपको लगेगा कि इतनी जगह में सर एक स्टेप लिख के सब कुछ हमें सिंप्लीफाई करने दे देंगे, पर देखो सुरसुरी होने वाला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? a is this, b is this, c is this. So mod c, that is minus cos theta minus 5/2 upon under root a square plus b square. लफड़े पे लफड़ा. चलो इसका स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2. ओहो, इट इज व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिटी विच गिव्स 1. तो ये तो 1 हो गया, और मॉड्यूलस में माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है भैया. सो इट विल बी थीटा minus 5/2 which is our zero answer. ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो फॉर्म लाने के लिए हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा वही आपको माइंड करना है, राइट? तो आज ये पोर्शन हम यहाँ तक रखते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 6th इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.